Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education, and today in this session, that is session number 3 of chapter number 5, Microsoft Word 2007, what we are going to learn. See, in today's session, we are going to see many of the new things, that is steps how to create a new document. अब वर्ड में आपको न्यू डॉक्यूमेंट आप कैसे क्रिएट करोगे, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड देन आफ्टरवर्ड वी आर गोइंग टू सी द टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट. देन जो आपने जो पैराग्राफ और टेक्स्ट जो भी आपने टाइप किया है, आप उसे फॉर्मेट कैसे करोगे, उसकी फॉर्मेटिंग है, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी. But before starting to that part, let's have a quick recap of what we have learned till now. So we have learned about MS Word, that it is one of the most popular program used for word processing, right? Word processing के लिए word MS Word is the most popular program and documentation purpose. Then MS Word is a part of MS Office. MS Word जो है वो MS Office का ही part है, which includes MS Office includes many more programs apart from MS Word, that is 4 main components, that is MS Excel, MS Present, PowerPoint, MS Access, MS Word. There are many such parts of MS Office, that is Microsoft Office. The short form of Microsoft is MS, right? Then however we will limit ourselves to Microsoft Word to this chapter. इस chapter में हम सिर्फ Microsoft Word के बारे में ही भी लर्न करेंगे और कुछ उसके रिलेटेड की इंफॉर्मेशन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंफॉर्मेशन हम लेंगे. Now Microsoft Word is an excellent software among any of the word processing software. It is one of the most excellent software, Microsoft Word, in which it only allows to type text. ये हमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए लेटर्स, स्टोरीज और वो सब टाइप करने की परमिशन देता है, एंड टू फॉर्मेट एवरीथिंग एंड to make it look attractive and everything. In Microsoft Word you can do all these things. Then afterward, what are the features of Microsoft Word? That it allows you to create a document, to save it and print any number of copies you want. Then it allows you to change the font style and size through artistic letters. वो font style and size को भी change करने के लिए आपको बोलता है. Then afterwards, spelling and grammar mistakes जो है can be checked and corrected instantly. इंस्टेंटली आपकी अगर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक है तो वो वहाँ पे चेक हो जाती है बाय टाइपिंग ओनली. देन आफ्टरवर्ड यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स एंड इमेजेस थ्रू क्लिप आर्ट्स एंड अदर एप्लीकेशंस. देन यू कैन इंसर्ट डेटा इन द टेबल फॉर्मेट. आप जो टाइम टेबल देखते हो वो ऐसे टेबल फॉर्मेट में आप भी इंसर्ट कर सकते हो उसमें. Then MS Word allows you to enhance the look of the document. आपके जो डॉक्यूमेंट का लुक कैसा दिखना चाहिए, आपको साइड में पेज बॉर्डर चाहिए, इट लुक्स अट्रैक्टिव विद डिफरेंट फॉन्ट्स, वर्ड आर्ट, वो कैसे सबका यूज है वो भी आपको MS Word में आपको दिखाया जाएगा. Then by using various borders and shading, then so these are the things in which you can do many things in MS Word. Right? So you have already learned how to create. आपने वो सीख लिया कि create कैसे करना है, open and save document in MS Word में आपको कैसे करना है. So now let's do a quick recap, and now we are moving forward. Then what are the steps to open Microsoft Word? Let us revise that. So first you need to click on the start button, then click all program option. In that click the Microsoft Office, and in that Microsoft Office click MS Word 2007. Okay, so your Microsoft window appears. Now in that we have learned the components of MS Word. So what are the components of MS Word? So that is the very first is the Office button. The very first component is Office button. The Office button, right? Now the Office button is seen on the topmost
लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो को टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में आपको ऑफिस बटन दिया जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सभी चीज़ें थ्रू वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताई थी। सो फॉर इफ यू फॉरगॉट देन यू कैन गो through the previous video so that you will come to know everything. It includes options similar to the option on file. उसमें सभी फाइल मेनू में जैसे ऑप्शन आते हैं उसमें भी इसी तरह के ऑप्शंस आते हैं versions of file menu in the earlier versions on Microsoft. Then after comes title bar. Right? So title bar is the topmost bar of the MS Word. जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है वैसे भी आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे आप जो इसका टाइटल दोगे वो टाइटल वहाँ पे बीच में आपको दिखाई देगा इन द टॉप मोस्ट ऑफ द राइट डिस्प्ले। देन कम्स रिबन। So ribbon is located at the top of Word window and has various tools used to adjust appearance. Ribbon means जो आप जहाँ से भी आप अपना टेक्स्ट की साइज है, फॉन्ट साइज है, जो भी आप चेंजेस करते हो, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, वो सभी चीज़ें ये रिबन में से होती है। देन कम्स क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कई तरह के ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको वो ऑप्शंस अपनी डिस्प्ले विंडो में ऊपर ही आपको दिखनी चाहिए तो आप सिलेक्ट करके उसे वहाँ पे आप रख सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्विक एक्सेस। आप उसे इजीली क्विकली एक्सेस कर सकते हो। फॉर दैट रीजन इट इज सेम फॉर क्विक एक्सेस एंड यू कैन ऐड एंड रिमूव दैट कमांड्स एज एंड व्हेन इट इज नेसेसरी। इफ यू डोंट वांट देन यू कैन रिमूव दैट थिंग। देन कम्स रूलर बार टू एडजस्ट द size of the page. The ruler bar is used. Then comes status bar. So the status bar displays information about the currently active जो आपका currently active document चल रहा है उसके बारे में आपका status क्या है, उसमें आपके पेज नंबर्स, आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, वो सभी आपकी इंफॉर्मेशन आपको देता है। That it shows the status of the document. Then comes scroll bar कि आपको पेज अप एंड डाउन जो कर रहे हो that is done with the help of the scroll bar. Like साइड में लाइन होती है जिस एरो को मूव करते आप, राइट? So that is the scroll bar. And then comes the workspace. Workspace means the blank white space in which you are writing anything. That is the workspace. So these are the components of MS Word which we have already studied in our previous session. And now we are going to see that how to create a new document and what are the steps to create a new document. Then we are going to see that typing a text, paragraph, and then formatting of paragraph. How to format to make it underlined, bold, italic. Then to capitalizing text after typing. आपने टाइप कर लिया और उसके बाद आपको टेक्स्ट को कैपिटल करना है तो वो आप कैसे करोगे? So till this much we are going to see everything practically with the help of the video. So let's get started. Okay, so students, we are going to start today, that is how to create a new document. So for creating a new document, the steps for that are, first of all you need to open MS Word, and you know that how to open MS Word. So to open MS Word, you need to click on the start button and you can see a Microsoft Word appears and the Microsoft screen appears on the screen. As in your course it is 2007, but over here I have 2010. So that is fine because there is not much changes in 2007 and 2008. So everything will be same over here. Okay, so you don't need to worry about that. Now for that, now you need to open MS Word. So as you can see that we have already opened MS Word over here. Now over here click on the Office button. Okay, in your 2007 Office button will be there, but over here I have a File button. So I am clicking on the File button and you can see this dialog box appears on the screen. Now you need to click on the new option. So I am clicking on the new option and then
you can see the new dialog box appears as shown alongside. You can see over here. यहाँ पे आपको एक नया dialog box दिखाई देगा, right? Then afterwards, select blank document. By selecting the blank document, a new document appears, and then you have to click the OK. A new blank document appears as below. You can see over here. एक नया document हमारा बन गया है. Okay, so these were the steps to create a new document. Let us recall the steps. That open MS Word, then click on Office button, and if you don't have that option, then click on the File option, then click the New option so that a new dialog box appears as shown, and then select blank document. After selecting blank document, click OK, and a new blank document appears as below. Okay, so this was the steps. Now typing a text. Now over here we are going to type a text. So as for now I am writing water bodies. You can see over here water bodies. Then I am writing river. Then I am writing a line on river. A river is a natural. A river is a natural water body usually fresh water flowing towards an ocean a lake, a sea, or another river, So I have typed a text over here. You can see water bodies, then river, and then I will written a definition of a river, that a river is a natural water body, usually fresh water, flowing towards an ocean, a lake, a sea, or another river. Now this was a text typing that by entering you can go to the another text, right? Then afterward paragraph. So paragraph is a portion of the text. जो paragraph है वो एक text का ही portion है, that is typed continuously without pressing the enter key. Means यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने enter की press करके नीचे नीचे लिखा गया है. But paragraph क्या है? Without pressing the enter key, you can continuously write a 10 to 15 lines all together. So when you press the enter key, the insertion point will jump to the new line. Means the point, this point which is blinking over here, that is known as insertion point. So when you just press the enter key, that point will go down. So for example, just now I am pressing that enter key over here. So you can see that insertion point goes down, right? So when you just press that key, enter key, the insertion point will jump to the new line and the new paragraph will start. अगर आपको new paragraph start करना है तो आप जैसे ही enter की press करोगे तो वो point एक नई line पे आ जाएगा और वहाँ से आपका नया paragraph शुरू हो जाएगा. Okay? So this was all about a paragraph. Now formatting a paragraph. Paragraph की formatting क्या है? Open blank new document and type the following paragraph. So over here I have already written something. मैंने यहाँ पे already कुछ लिखा गया है. So I am not going to open a new document. We are going to make changes in this only. हम इसमें ही changes करेंगे. अगर आप घर पे practice कर रहे हो तो आप वहाँ पे कोई भी paragraph लेके आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? और फिर पहले तो save the above document on the desktop and name it as our water bodies.
तो पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट हमारा है उसे आप सेव कर लो. एंड यू नो हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट? यस. ओके, एंड जस्ट नेम दैट डॉक्यूमेंट एज water bodies. So I'm saving this document. I'll press Ctrl plus S. So you can see the save option comes over here. And water bodies, Word document. Okay. Now I'll save this. Save. Now on the title bar you can see that our title appears as a water body. Right? Water body is Microsoft. Now you can see. So on the title bar also the name changes itself, right, by saving the document and by giving the name to that document. So now to first of all you need to select the text. It is important to select text before using any tools. अगर आपको कोई भी यहाँ पे changes करने हैं, अगर आपको कोई भी चार्ट की उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो सबसे पहली बात. सो बिफोर यूजिंग एनी टूल्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, राइट, देन हाउएवर देयर आर डिफरेंट वेज टू सिलेक्ट टेक्स्ट. टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट वेज है. अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इज ऑलवेज हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन. एक बार आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा. कैसे? Let me show you. Here I am selecting water bodies. Okay, तो आप देख सकते हो कि वो हाईलाइट हो गए, उसके ऊपर ब्लू कलर का वो हाईलाइट मार्क आ गया. So that means I have selected the text. Now to select a word, double click on the word in quick succession. अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप उस वर्ड को डबल क्लिक भी कर सकते हो. कोई सिंगल वर्ड को आपको करना है तो आप उसे डबल क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ तो वाटर पे सिलेक्ट हो गया. नाउ आई वांट टू सिलेक्ट रिवर, सो यहाँ पे डबल क्लिक किया, रिवर सिलेक्ट हो गया. ऐसे भी आप कर सकते हो. एंड देन टू सिलेक्ट अ फ्यू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट की कुछ लाइनें सिलेक्ट करनी है. तो प्लेस द कर्सर, आपको पहले ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है आपका, वो आपको कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है. पहले तो कहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे आपको कर्सर ले जाना पड़ेगा. तो मुझे तो यहाँ से सबसे पहली लाइन से करना है, तो आई हैव पुट माई कर्सर ओवर देयर. नाउ बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, आपके लेटर के, आपका जो वर्ड है उसके आगे आपको कर्सर पॉइंट आउट करना है. और पैराग्राफ यू वांट टू सिलेक्ट एंड देन क्लिक करो, एक सिंगल क्लिक एंड देन ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट. और आप पूरे टेक्स्ट को ड्रैग करते हुए नीचे लेके जा सकते हो. देखो मैंने यहाँ तक कर लिया सिलेक्ट. आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है. यस. नाउ टू मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक्स, आपको अब सिलेक्ट करना तो आ गया कि सिलेक्ट कैसे करोगे. नाउ हाउ टू मेक दिस बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक. अब इसे बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक में कैसे कन्वर्ट करोगे. सो टू मेक इट बोल्ड, the options of bold, italics and underline are similar to those on WordPad. So it helps to highlight the title or a particular word or a sentence. Bold, italic और underline क्या आपको help करेगा कि वो आपके title को थोड़ा attractive भी बनाने के लिए और वो उसे highlight करने के लिए भी use हो जाए. So in the above paragraph, make the titles I have given water bodies, then river, and then I have written. So to make it वाटर बॉडीज जो मैंने लिखा है उसे बोल्ड करने के लिए what I will do, first I will select water bodies, right, then I'll click on the bold option. Over here you can see B is written, so that is bold option, right, and I will select on that. So आप देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा bold हो गया, means ये dark हो गया. So on the home menu tap of ये ribbon, ये जो पूरी स्पेस है, वी कॉल्ड इट एज रिबन. आई टोल्ड यू एवरीथिंग, every changes is done from the ribbon only. Then afterward I need to make this water bodies italic. So after bold option you can see I is written, so that is the italic option. So now click on that
now you can see the font changes to italic, right? Now I want to make this water bodies underline. मुझे ये water bodies जो मैंने लिखा है उसे underline भी करना है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि U लिखा गया है after I. So that is the option of underline. I'll click on that and you can see यहाँ पे अब underline भी हो गई है, right? So in this way, now you can see your title water bodies is now highlighted. ये अब highlight होके आपको सामने attract कर रहा है, right? Because it is bold, italic and underline. So in this way you can make any kind of formatting in your text to make it looks highlighted. So similarly there were the steps to follow to make the text bold, italic and underline. Okay, so now अब यहाँ पे मैंने water bodies तो लिख लिया. अब मुझे पूरे water bodies को capital में लिखना है and I forgot to write that water bodies in capital. मुझे तो water bodies capital में चाहिए था. So now what I am supposed to do, I will not erase this and write it again. मैं इसको erase करके फिर से नहीं लिखूँगी. So there are the steps to change this water bodies into capitals. Okay. So first you need to select the word. As I told you, कोई भी changes करने से पहले आपको word, जो भी changes जिस word में आपको चाहिए उसे आपको select करना पड़ेगा. So I will select the water bodies. So first select the word, then click on the change case option on the ribbon. Ribbon में आप यहाँ पे देखोगे ये एक बड़ा A और यहाँ पे एक छोटा A है. So that is the option of change case, right? कि आपको जो ये यहाँ पे मैंने letters लिखे वो आपको कौन से case में चाहिए, upper case, lower case. So ये change case का option है, that is a big A and the small a. So I will click on that. A list of option appears. You can see sentence case, lower case, upper case, capitalize each word and toggle case. Now select the option of capitalize each word. मुझे यहाँ पे जो पूरे letters है वो मुझे capital चाहिए. So I will select capitalize each word option, right? And repeat the same steps for the other one. So in this way you can change the cases of all this. Whenever you want a capital, then you can do like this way. Okay. So these were the steps to change the cases, that after typing, if you want to make the text capitalized, then in this way you can do. Here you can see now water is the water of the W in that is capital and bodies का B भी अब capital हो गया है. You can see over here, right? So in this way you can change the case also. So this was all about today's session. I hope that you have understood it better. Okay. So I hope students that you have seen the video and you have recalled and you have seen everything practically, that how to format the text, how to type a text, first paragraph, then how to format the text, then afterward how to make it bold, italic and underlined. Then after once typing out the text, आपने एक बार टेक्स्ट को टाइप कर लिया, उसके बाद अगर आप भूल गए कि अरे यार मुझे तो यहाँ पे कैपिटल लेटर करना था, तो आप फिर से इरेज करके फिर नहीं लिखोगे, उसमें भी आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कैपिटलाइजिंग द टेक्स्ट. दैट आल्सो यू हैव सीन, राइट? सो एवरीथिंग आई होप दैट इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ द वीडियो. मैंने जो आपको वीडियो दिखाया उसके हेल्प से आपको सभी चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी कि आप कैसे करोगे. एंड इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप एट होम, देन यू कैन ट्राई इट आउट. तो आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, कोई भी पैराग्राफ अपनी बुक में से या क्वेश्चन आंसर कुछ भी लिख सकते हो एंड देन ट्राई टू फॉर्मेट इट आउट, और इसे फॉर्मेट करने की ट्राई करो. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. And as a part of revision, in the description section, I am going to give you some of the questions. And if you know the answer, then just comment your answer in the comment section. Then give your answer in the comment section में आप अपने answers मुझे दे सकते हो. And still, if you have any kind of doubt, then you just rewatch the video or else tell your doubts in the comment section. I will solve it
आउट ओके, मैं ये डाउट्स आपके सॉल्व कर दूंगी. ओके, so I hope that everything is clear to you and the worksheet will be given which you are supposed to solve it in your book. Okay, so till then, bye bye, thank you, take good care of yourself.